So the length is 1 more than twice its breadth. Twice means 2 times of breadth or plus 1. Now this is my equation number 2. Now I can put the value of x in equation number 1. So by putting x is equal to 2y plus 1 in equation 1 we get 2y plus 1 into y is equal to 528. Again we can multiply it. We will get 2y square plus y is equal to 528. And arrange it. Now you can see there is a quadratic equation and we can solve it by using splitting middle term. And in next exercise we will learn the formula क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हम उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ओनली एंड यू ऑल नो वी कैन सॉल्व इट बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड ऑल्सो. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of two consecutive positive integers is 306. Two consecutive positive integers meaning those integers whose difference is 1, जिनमें एक ही का गैप होता है. तो let the two, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. टू पॉजिटिव consecutive integers b, एक x सपोज कर लेंगे और एक को x प्लस 1. अब यहाँ हम x और y सपोज नहीं करेंगे बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हैं तो एक x लेना है और दूसरा x प्लस 1 लेना है. और अगर हमने x और y भी ले लिया तो हमें बाद में y को जो है वो इज इक्वल टू x प्लस 1 एज्यूम करना पड़ेगा. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. प्रोडक्ट आपको गिवन है मीनिंग x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306. So it will be x square plus x minus 306 is equal to 0. So this is your quadratic equation for the given situation. Next, part number 3. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. मीनिंग रोहन एंड उसकी मदर का जो है वो ए प्रेजेंट एज का रिलेशन गिवन है एंड देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर देयर एजेस आफ्टर 3 years. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ Rohan and his mother be x and y years respectively. अब it is given that Rohan's mother is 26 years older than him. जो मदर हैं मीनिंग y is equal to 26 plus x. So this is my equation number 1. After 3 years, their ages will be, अब आफ्टर 3 years क्या होगा, रोहन हो जाएगा x प्लस 3 years का एंड मदर जो होंगी वो y प्लस 3 years की होंगी. एंड व्हाट इज विल बी द रिलेशन देन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस will be 360 according to question. X plus 3 into y plus 3 is equal to 360. Now again we are having y is equal to 26 plus x. So by putting the value of y here we will get a quadratic equation in x. So x square plus 32x minus 273 is equal to 0 is the required equation for the given situation. Next question. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed
If the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Now the distance is, that is 480 kilometer. Let the speed of train is equal to x kilometer per hour. So therefore time taken, that will be distance divided by speed, and it will be equal to 480 by x. According to question, new speed is, now the speed is 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, मीनिंग स्पीड जो है अब कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम भी चेंज हो जाएगा. टाइम टेकन विल बी अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड. नाउ द डिस्टेंस इज सेम 480, बट द स्पीड इज नाउ x माइनस 8, मीनिंग न्यू स्पीड जो है वो प्रीवियस स्पीड के कंपैरेटिवली कम है. So it means it will take more time now, and the difference of the both of the times is given to you 3 hours. So again we can write this time is greater than the original one. So 480 by x minus 8 minus 480 by x is equal to 3. Now you can solve this, and we will get 480x minus 480 into x minus 8 is equal to 3x into x minus 8. 480x minus 480x plus 3x square minus 24x. Now you can arrange it. Now we can divide this equation by 3. On dividing by 3, we will get x square minus 8x plus 1280 is equal to 0. So this is our required equation for the given situation. Students, today you will do exercise 4.1 and start the revision of chapter 3. There will be test of exercise 3.1, 3.2 and 3.3 on Wednesday. Thank you.